Assalamu alaikum students. Today we start our first question. So we are starting from the basic question or called a sample example. From the following receipts and payment account and adjustment given below, you are required to prepare income and expenditure account for the year ending 31st March 2020 of Vena Cultural Association Satara. So students, in this question we are required to prepare only income and expenditure account. Okay, balance sheet नहीं बनानी है. So question, receipt and payment account for the year ending 31st March 2020 to balance brought down, cash in hand, cash at bank, to subscription 2018-19, 19-20 and 2021. अभी हमारा ईयर कौन सा है? व्हाट इज़ आवर करंट ईयर? आवर करंट ईयर इज 2019 एंड 2020. दैट इज़ फ्रॉम 1st April 2019 to 31st March 2020. So 2018-19 called previous year PY and 2020-21 called next year NY. Next to donation bracket में general, to entrance fees, to entrance on fixed deposit, to picnic receipt. Now come to payment side. Buy rent 2018-19, it's a previous year rent, and 2019-20 current year rent. Then fixed deposit, sundry expenses, insurance, printing and stationery, picnic receipt, salaries, traveling. Buy advertisement 2018-19. Then buy balance carried down, cash in hand and cash at bank. Come to adjustments. Adjustment number 1. Outstanding rent for the current year was rupees 7,000. Next, 60% entrance fee should be capitalized. Outstanding subscription for current year was rupees 20,000 and prepaid insurance rupees 1,000. So students, come back to again receipt and payment account. First हम देखेंगे subscription 2018-19, it's not our current year, इसको हम ignore करेंगे. एंड 2020-21 जो हमारा नेक्स्ट ईयर का है, इट्स कॉल्ड प्रीपेड सब्सक्रिप्शन, राइट. जो नेक्स्ट ईयर की सब्सक्रिप्शन हमें इसी साल मिली है, बट वी वोंट प्रिपेयर एनी बैलेंस शीट, तो इसको भी हम इग्नोर करेंगे. नाउ कम टू रेंट. बाय रेंट 2018-19, इट्स अ प्रीवियस ईयर रेंट. सो क्या करेंगे, हम इसको इग्नोर करेंगे. जो भी हम एक्सपेंसेस और इनकम इग्नोर करते हैं और लिखते हैं, ये मैंने आपको कब बताया था, जब याद है हमने इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देखे थे लास्ट टू लास्ट लेक्चर में, क्या व्हाट इज़ इनकम अकाउंट एंड व्हाट इज़ एक्सपेंडिचर अकाउंट, राइट. व्हाट आइटम्स शुड बी एंटर्ड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड व्हाट आइटम्स शुड बी इग्नोर्ड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. क्लियर स्टूडेंट्स. नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर द करेंट ईयर वॉज रुपीज 7,000. इट्स अ करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, सो क्या करेंगे, हम रेंट में ऐड करेंगे. देन 60% एंट्रेंस फी शुड बी कैपिटलाइज्ड. जितनी भी हमारा एंट्रेंस फीस है उसमें से 60% हमको क्या करना है, कैपिटल में ऐड करना है. सो लेस इन एंट्रेंस फीस एंड ऐड इन कैपिटल अकाउंट. नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर. अगेन करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, सो क्या करते हैं, सब्सक्रिप्शन में ऐड करते हैं. एंड लास्ट, प्रीपेड इंश्योरेंस रुपीज़ 1,000. प्रीपेड को हम क्या करते हैं, लेस करते हैं. ओके, नाउ मूव फॉरवर्ड टू द आंसर. एज वी आर ओनली प्रिपेयर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, हमें बैलेंस शीट नहीं बनानी है. फर्स्ट हेडिंग, इन द बुक ऑफ वीना कल्चरल एसोसिएशन सातारा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2020. Debit side shows expenditure and credit side shows income, because income expenditure is a nominal account and nominal accounts having a formula of debit all expenses and losses, credit all income and gain. expenses losses जो भी होंगे सब डेबिट में लिखना है और इनकम और गेन जो भी होगा सब क्रेडिट में लिखना है. सो फर्स्ट वी सॉल्व आवर डेबिट साइड, एक्सपेंडिचर साइड. Number 1, to rent, there is an adjustment on rent. So inner column
54,300. Add outstanding, inner column 7,000. So outer column 61,300. There will be no second effect because we won't prepare any balance sheet. Next to sundry expenses, outer column 8,000. Then to insurance, there is an adjustment on insurance, so we write in inner column 12,000 less prepaid insurance, inner column 1,000, so outer column 11,000. Next, printing and stationery, outer column 6,000. To picnic expenses, outer column 18,000. To salary, outer column 20,000. To traveling expenses, outer column 13,000. Now come to income side. Number 1, by subscription, there is an adjustment on subscription, so we write in inner column rupees 1 lakh. Add outstanding subscription, inner column 20,000, so outer column 1,20,000. Next, by donation, outer column 25,000. Next, by entrance fees, there is an adjustment on entrance fees, so we write in inner column 15,000 less 60% capitalized, so 9,000. 15,000 minus 9,000, so outer column 6,000. Then by interest on fixed deposit, rupees 4,800. By picnic receipt, outer column 20,000. Now our income and expenditure account is over. After completion of income and expenditure account, we have earned surplus, so we write in expenditure side to surplus amount 38,500, and surplus means excess of income over expenditure. Clear hai? So the question is over because we won't prepare balance sheet. Okay, now move forward to the actual question. Illustration number 7. From the following receipt and payment account and additional information, prepare income and expenditure account and balance sheet as on 31st March 2019. First question, receipt and payment account for the year ended 31st March 2019. Number 1, to balance brought down, subscription, to donation, to entrance fees, to interest. Payment side, by salaries, by printing and stationery, by commission, by rent, by electric charges, by furniture, and by balance carried down. Now come to adjustments. Number 1, outstanding rent was rupees 200. Number 2, subscription include rupees 1,000 as subscription received in advance, and subscription outstanding for current year was rupees 500. Adjustment number 3, depreciate furniture at the rate 8% per annum. Adjustment number 4, 50% entrance fee should be capitalized. And adjustment number 5, capital fund was rupees 3,000. Clear? So first, a receipt side to balance brought down, it's called opening balance. लेकिन listen students, यहाँ पे हम कोई प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बना रहे. It's completely and purely based on non profit organization. सो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस कभी आता नहीं है, इसलिए हम ओपनिंग बैलेंस को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं. नाउ कम टू एडजस्टमेंट नंबर 1, आउटस्टैंडिंग रेट वॉज रुपीज़ 200. सो क्या करेंगे, हम रेंट में ऐड करेंगे सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड कॉल्ड एज आउटस्टैंडिंग रेंट. एडजस्टमेंट नंबर 2, सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 1,000 एज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस. 1,000 रुपीज़ सब्सक्रिप्शन हमको जो मिला है, क्या मिला है, एडवांस मिला है. एडवांस मीन्स नेक्स्ट ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर. आने वाले साल का सब्सक्रिप्शन, नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन हमको करंट ईयर में मिला है. सो इट्स नॉट अ करंट ईयर इनकम, ये हमारे करंट ईयर की इनकम नहीं है. तो हम क्या करेंगे, लेस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन and second effect on balance sheet liability side called subscription received in advance, either prepaid subscription. And subscription for outstanding for current year rupees 500.
एंड करंट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रुपीज़ 500. सो क्या करेंगे, ऐड इन सब्सक्रिप्शन बिकॉज इट्स अ करंट ईयर्स आउटस्टैंडिंग, उसको हम ऐड करेंगे. एंड सेकेंड इफेक्ट इज ऑन बैलेंस शीट एसेट साइड. नेक्स्ट, डेप्रिसिएट फर्नीचर एट द रेट 8% पर एनम. सो क्या करेंगे, लेस फ्रॉम द फर्नीचर एंड एक्सपेंडिचर साइड टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर. देन 50% एंट्रेंस फी शुड बी कैपिटलाइज. तो हम क्या करेंगे, इनकम साइड एंट्रेंस फीस में से लेस 50% कैपिटलाइज्ड. एंड बैलेंस शीट असेट्स, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड कैपिटल फंड में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे 50% एज अ 50% एंट्रेंस फी शुड बी ऐड इन अ कैपिटल फंड. एंड लास्ट कैपिटल फंड वॉज ₹3000. तो हम कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. क्लियर है? नाउ मूव फॉरवर्ड टू द आंसर. First heading, income and expenditure account for the year ending 31st March 2019. First we solve expenditure side. Number 1 to salaries, outer column 4000. Then to printing and stationery, outer column 1000. To commission, outer column 500. Next to rent, there is an adjustment on rent. So inner column 2000, add outstanding rent. Inner column 200, outer column 2200. Then to electric charges, outer column 1500. To depreciation on furniture, outer column 640. Now come to income side. Number 1, by subscription, there is an adjustment of subscription, so we write in inner column 5000 less advance subscription, inner column 1000. So 5000 minus 1000, inner column 4000. Add outstanding subscription 500, so outer column 4500. Next, by donation, outer column 5000. Next, by entrance fees, there is an adjustment on entrance fees, inner column 4000 less 50% capitalized, inner column 2000. So 4000 minus 2000, outer column 2000. Next, by interest, outer column 1000. So students, income and expenditure account is over. After completion of this account, we have earned surplus called excess of income over expenditure, and the surplus amount is 2660 rupees, and this amount add in balance sheet. Now move forward to the balance sheet. First heading, balance sheet as on 31st March 2019. Number 1, liability side. First, capital fund, inner column 3000. Add 50% entrance fees, inner column 2000. Add surplus, inner column 2660. So outer column 7660. Next, outstanding rent, outer column 200. Then next, subscription received in advance, either prepaid subscription, outer column 1000. Now move forward to asset side. Number 1, furniture. There is an adjustment on furniture, so inner column 8000 less 8% depreciation, inner column 640. So outer column 7360. Next, cash in hand, outer column 1000. Next, outstanding subscription, outer column 500. Now our balance sheet is over. All the adjustment and all the posting have been done, and after completion of balance sheet, our balance sheet is tally, and the tally amount 8860. ओके, सेम जैसा हम फाइनल अकाउंट में बैलेंस शीट टैली करते हैं, उसी तरह हमें एनपीओ में भी बैलेंस शीट टैली करना है. ओके स्टूडेंट्स, सो इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर वी मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम.